Good evening and a warm welcome to all our viewers on Doordarshan Sports as we bring you CricLIVE, a review of the first three T20s played between India and the West Indies, which India is already leading by 2-1 in this five-match T20 series. I'm your host Arjun, and with me is former cricketers. On my immediate left, we have Sabah Karim, former Indian national wicketkeeper batsman whose career unfortunately was cut short by an eye injury, but he's made his debut as far back as 1989 and he played till 2000. And then of course we have Ajay Mehra, who is a commentator, broadcaster and a former India national as well. Thank you, Arjun. Both our players have not only played for India but have represented Ranji Trophy for the state sides, which is obviously a prerequisite if you're going to play for India. Of course, Ajay played for Punjab and Rajasthan, and Sabah played for Bihar and Bengal. So warm welcome to you on CricLIVE. Thank you so much. Thank you, Arjun. So kind of you, and thanks for the knowledge as well. You know, you got so much of history for us. Well, it's always interesting for our viewers to know that what the profile of our experts are, and sometimes it's important to jog their memory. True. Because we used to watch both of you play, in fact, and really hoot for India back then. Yeah. I hope you're not making us feel too old. Well, I certainly hope not. And if you can recall some of your experience in your review, that would be great as well. So just to keep things in perspective, the review of the first three T20s would only be of the three T20 matches. It will not include today's T20 match, which will be reviewed and discussed in the fourth umpire program, which will succeed CricLIVE. So that's the ambit of our program, to see what the top batting, bowling, fielding and team performances are. So let's have a look at how our batters perform, India and the West Indies. Surya Prakash Yadav had a highest score of 76 with an aggregate of 111 with an average of 37, and he was the player of the match in the third T20. Carl Myers of the West Indies, total aggregate of 96 with the highest of 73. Brandon King with the highest of 68 with a total aggregate of 88 with an average of 44. Rohit Sharma, the captain, and he has been in the news because he retired hurt in the third T20 with a back spasm. But he scored a valuable 64 as well when he retired in 11 in the third T20. So that brings his aggregate to 75. And the key question would be whether he will play in the fourth T20 or not as captain. And then Rishabh Pant, the wicketkeeper batsman for India, scoring 33 as his highest, as total aggregate of 71, and Rishabh Pant, remember, has scored a 33 in the third T20, which India won as well. So Sabah, let's begin with you. Surya Prakash Yadav, he scored that valuable 76, which won in the Player of the Match award in the third T20. How would you rate him as a batsman? 111 runs so far, and T20 is not an easy game to play. Well, but he has mastered that, Arjun. I think Surya Kumar Yadav knows how to get runs, how to get quick runs, how to maintain a very healthy strike rate. He's also adept against spin bowlers, plus against seam bowlers. He creates those angles and then he scores runs by putting the ball in the right areas in terms of batting also. So it is a wonderful sight to watch him bat, and the way he played in the last T20 in such an unusual position as an opener. It speaks volume of his ability to adapt to different conditions and to different positions. In the first two encounters that India played, he also opened in both the innings, did not do very well, but for him to come back and score those runs as an opener in the third T20 just goes to show that he's highly experienced, and I think India has given that kind of responsibility to Sky to score these runs. Well, Ajay, अब आपसे पूछ लेते हैं, ऋषभ पंत जो है reliable attacking batsman, has done very well in test match cricket. Absolutely. Now in T20 as well, and responsibility sits well on his shoulders. So उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 33 valuable runs in the third T20. Absolutely, I think सबसे बड़ी चीज़ अर्जुन है कि उन्होंने मैच को फिनिश किया. You know, that's important, and he knows his role. Now, as rightly mentioned, अर्जुन की एक key player है, एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है. और जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस होता है, जब आपने टेस्ट मैच क्रिकेट में अच्छा किया है, वनडे क्रिकेट में अच्छा किया है, यू नो दैट कॉन्फिडेंस इज शोइंग एंड रिफ्लेक्टिंग इन हिज बैटिंग नाउ. ही नोज हाउ टू गो अबाउट. कई बार ऐसा भी होगा, यू नो, समटाइम्स जैसे वो आउट होंगे, आपको लगेगा कि एक गलती कर दी, एक आसानी से आउट हो गए, पर ये ऋषभ पंत आपके लिए है, बिकॉज यू नो ही इज अ स्पेशल प्लेयर, ही इज अ स्पेशल टैलेंट. ही कैन विन यू गेम्स, इज अ बिग मैच विनर फॉर इंडिया.
और थोड़ी सी मुझे हैरानी ये हुई थी कि इस श्रृंखला में क्योंकि अब इंग्लैंड में इनको ओपन भी कराया गया, यहाँ पे थोड़ा मध्य क्रम में खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव, जैसे सभा कहते हैं स्काई, उनके पास एक स्पेशल टैलेंट है, उनको ओपन कराया जा रहा है। बट आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी अडेप्ट, क्योंकि T20 में मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको ओपन भी कराया जाए, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी होगा, और क्या अगर आंकड़े आप देखें इस वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध, तो यादव की बल्लेबाजी आई नहीं है। एक वो 33 रन नवाज उन्होंने बनाए, दूसरे T20 में 24 बनाए थे 12 गेंदों में, पर इनकी जो स्ट्राइक रेट है हमेशा वो इनकी ताकत रहती है। ही मूव्स प्रीटी क्विकली, बहुत जल्दी अपने गियर बदल लेते हैं। बट आई वाज मेंशनिंग कि कहीं ना कहीं अगर ये ओपन भी करते हैं, नो हार्म। प्रॉब्ली अभी ये देखना होगा कि जब विराट कोहली T20s में आते हैं तो वो कहाँ पे खेलेंगे। बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज गोइंग टू बी अ बिग प्लेयर फॉर इंडिया इन द एशिया कप एंड द वर्ल्ड T20 कमिंग अराउंड। सब अभी अजय ने बात की टेम्परामेंट की, ऋषभ पंत हैज दैट इन प्लेंटी। सूर्य कुमार यादव की हम बात कर रहे थे विद 76। अब कैप्टन रोहित शर्मा के बारे में बताइए, बिकॉज काफी न्यूज सर्कुलेट कर रहा है, बैक स्पैज्म, क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? आपको रोहित शर्मा के बारे में क्या कहना है? देखिए, पहले मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, 64 रन बनाए, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, कठिन विकेट पर आकर एक कप्तानी पारी खेली, और कई बार उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि अब वो यही चाहते हैं कि हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी की जाए T20 में, और यही डिमांड है T20 क्रिकेट का। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कप्तान जो है ख़ुद रास्ता दिखाए, जो कि रोहित शर्मा ने किया, और इसी वजह से पूरी टीम जो है इस समय तैयार है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए। अब बहुत ही कठिन परिस्थिति थी वो, जो विकेट था पहला जहाँ पर T20 मुकाबला हुआ, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल विकेट था, वहाँ पर आकर उन्होंने लीड किया। उसके साथ दिनेश कार्तिक ने भी अंतिम समय में आके उन्होंने भी रन्स बनाए, जिसकी वजह से एक सम्मानजनक स्कोर भारत ने खड़ा किया। बहुत ज़रूरी है भारत के लिए आने वाले समय में भी, चाहे वो एशिया कप हो या फिर विश्व कप हो, कि रोहित शर्मा का बल्ला इसी प्रकार से चलता रहे। कप्तानी उनको पता है क्या करना है, बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि कप्तान का बल्ला जो है वो भी चलता रहे और इसी प्रकार से चले, ताकि हमेशा भारत के हित में ही काम हो। अजय, क्योंकि एक बैटिंग बेस्ड T20 है, तो मुझे पिच के बारे में बताइए। तरोवा में खेला था, फिर सेंट किट्स एंड नेविस में भी 2 गेम उन्होंने खेले हैं, तो पिच का क्या रोल रहा है यहाँ पर? आई थिंक फर्स्ट T20 में थोड़ा सा धीमा था, और जैसे सभा ने बिल्कुल ठीक कहा, आई थिंक क्रेडिट टू रोहित शर्मा, जैसे वो अर्शद ने लगाया, एंड देन दिनेश कार्तिक फिनिशिंग ऑफ थिंग्स, दैट्स द रीजन इंडिया पोस्टेड अ बिग स्कोर। वो आसान विकेट नहीं था, क्योंकि धीमा होता है, थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ता है एज अ बैटर, थोड़ा सा वक्त आपको चाहिए, और खासकर उसमें जो शॉट सिलेक्शन है, आप कैसे चुनाव करते हैं, किस शॉट्स का करते हैं, वो बहुत अहम है। और दिनेश कार्तिक की बात करता, वो जो पहला T20 था तरोबा में, जैसे उन्हें 41 रन नाबाद बनाए केवल 19 गेंदों में, ये दिनेश कार्तिक है, ये भी एक स्पेशल टैलेंट है, और जैसे उभर के अब आ रहे हैं, ही इज लुकिंग रियली गुड। एंड कहना कि सेकंड मैच में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तीसरे बल्लेबाजी आई नहीं, पर मुझे लगता है कि अब क्लियर द मैच बने थे फर्स्ट T20 में। आई थिंक द फर्स्ट T20 का जो विकेट था तरोबा में थोड़ा सा धीमा था। सेंट किट्स में जैसे आपने कहा अर्जुन की, वो विकेट ज़्यादा बेहतर था बैटिंग के लिए, एंड आई थॉट सेकंड T20 में वेस्ट इंडीज चेज्ड आउट प्रीटी वेल उनका। आई थिंक ब्रेंडन किंग जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की। आई थिंक द फीचर फॉर वेस्ट इंडीज हैज बीन बोथ द ओपनर्स, काइल मेयर्स एंड ब्रेंडन किंग, जैसे उन्होंने बल्लेबाजी करी है, दे आर लुकिंग रियली गुड, और ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। ऑल्दो वेस्ट इंडीज की टीम अर्जुन हाल ही में, अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें, टेस्ट मैच क्रिकेट की बात करें, उन्हें निराश किया है। उनके पास कुछ बड़े नाम नजर आते हैं, वैसा प्रदर्शन नजर नहीं आता, पर T20 में ये टीम थोड़ी अलग है। पर आज उनके लिए एक बड़ा मुकाबला रहेगा, बिकॉज अगर आज वो हार गए तो श्रृंखला भी हार जाएंगे। ये पहले T20 में अच्छा एडजस्टमेंट रहा डिस्पाइट डिफिकल्टीज। 190 रन हमारे दिनेश कार्तिक वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, एंड वेस्ट इंडीज ओनली रिप्लाइड विद 122। तो यहाँ पे ब्रेंडन किंग फ्रॉम द वेस्ट इंडीज परफॉर्म वेल, फॉर द इंडियन बैट्समैन आल्सो एडजस्टेड। तो ये जो एडजस्टमेंट है, आप वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में खेल रहे हैं, अलग अलग आइलैंड्स में अलग अलग पिचेस होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, एंड नाउ ऑफ कोर्स यू मूविंग अक्रॉस बॉर्डर्स आल्सो। ये तो अच्छी बात है कि फ्लोरिडा में फिर से मैच हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ऐसे देशों में भी मैच हो जहाँ पर क्रिकेट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और इससे गेम का विकास होता है, और उसी तरह से दुनिया के हर एक कोने में भी क्रिकेट पहुँच जाएगा। अब रही बात विकेटों की, अलग अलग विकेट पे, यही तो चैलेंज होता है एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का, कि जिस तरह की विकेट होती है वहाँ पर आपको एडजस्ट करना होता है, और भारत ने बखूबी वो रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया है, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो भारत के बाहर की विकेटें हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ में हो। अब फ्लोरिडा में जो मैच होने वाला है वहाँ पर भी कुछ अलग किस्म के विकेट मिलेगी, पर चूँकि हमारे पास कई सारे अनुभवी प्लेयर्स हैं,
जो यंगस्टर्स भी हैं उनको बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है अब, और T20 में एक तरफ तो आपको आक्रामक क्रिकेट खेलनी है, उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप कंडीशंस को भी इज्जत दें और उस प्रकार से फिर आप अपने टोटल्स को सेट करें या फिर टारगेट सेट करें। तो यही प्रयास होगा भारत आने वाले मैचेस में भी। और अभी जब तक जो 3 मैचेस हुए हैं, केवल दूसरा T20 मुकाबला अगर हम हटा दें जहाँ पर भारत की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, उसके अलावा पहला T20 मुकाबला और तीसरा T20 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी हुई है और भारत ने बहुत बड़े अंतर के साथ मैचेस भी वो जीते हैं। तो अजय, यहाँ पर हम जो हैं बैटिंग परफॉर्मेंसेस को रिव्यू कर रहे हैं, जो टॉप 5 बैटर्स हैं। यू मेंशन्ड अबाउट केल मायर्स एंड ब्रैंडन किंग, बट फॉर द वेस्ट इंडीज उनके जो कप्तान हैं निकोलस पूरन, उन्होंने अभी तक ही इज नॉट फायर्ड येट विद स्कोर्स ऑफ 18, 14 and 22, and the team looks to its captain to lead from the front. Absolutely, I think that has been the lacking part for West Indies because Pooran is a big name. He's leading the team as well. एक बहुत बड़ी responsibility रहती है अर्जुन, and someone like Hetmyer as well. Again a special player. कहने का जो मध्य क्रम है वेस्ट इंडीज का वैसा चला नहीं है. And I thought इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है because पूरन इनके आंकड़े अगर आप देखें 18 फिर 14 फिर 22, बड़ी चीज़ ये है कि जब आपको स्टार्ट मिल रहा है यू गेटिंग दोज रन्स, आपको वो एक शुरुआत मिल रही है, आप जल्दी आउट हो जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है, पर जो 18, 14 और 22 रन बना लेते हैं उसको कन्वर्ट करना, तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। एंड ही इज़ अ क्लास एक्ट। अब वी ऑल नो इनको IPL में हमने देखा है कैसे ये पारियां खेलते हैं, ही इज़ गॉट लॉट ऑफ टैलेंट, वो क्षमता नज़र आती है, पर कहीं ना कहीं चल नहीं पा रहे। और इनके साथ अगर हेटमायर को भी आप देखें, वहीं पे थोड़ा सा लैक कर रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम मध्य क्रम में, बिकॉज वी वर मेंशनिंग पहले भी कि अगर आप ब्रेंडन किंग को देखें जैसे उन्हें बल्लेबाजी की है, एंड आई वाज रियली वेरी इंप्रेस विद हिम इन द सेकंड T20, जैसे वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, सब फुटवर्क था, लॉट ऑफ प्लेयर्स अगेंस्ट स्पिन, कई बार वो अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास करते हैं, बट वंस यू आर कमिंग डाउन द ट्रैक प्लेइंग विद द फुल फेस ऑफ द बैट, अच्छा लगता है देखने में। एंड आई थिंक ही इज अ गुड टैलेंट और उभर के आए हैं ब्रेंडन किंग एंड काइल मेयर्स एज वेल, द वे ही इज बैटेड, पर कहीं ना कहीं जो समस्या रही है वेस्ट इंडीज के लिए पूरन रहे और हेटमायर रहे। Getting back to Arjun, जो अजय ने बात की है कि निकोलस पूरन, if you look at the stats, last T20 14 of 11, 30, 20, 22 of 23, that's just not on. Yeah. This is a T20 game and you need to understand the demands of the match. And if you play like this, you possibly can't expect your side to win. More so when you're the captain. Look at Rohit Sharma's strike rate, 64 of X number of deliveries with a very healthy strike rate, and that's what is needed from Nicholas Pooran. हेटमायर के बारे में सही कहा अजय ने, उनके रन नहीं आ रहे, तो ये 2 मेनस्टे हैं इस समय T20 मुकाबलों में वेस्ट इंडीज़ के लिए, और जब आपके 2 मेन प्लेयर फायर नहीं करेंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी। ब्रैंडन किंग हैज़ डन वेल, Kyle May is another exciting talent, and he has really emerged as a very reliable opening. 73 is his highest, an aggregate of 96 in this series so far. And against a top quality bowling side like India, it's not easy for such cricketers to play so well against top quality side, which also has 2 genuine spinners in their ranks. So I think that's a great challenge for these youngsters who are coming through the system. Kyle May has batted very well in the last T20 game. Before him, Brandon King, in those 2 matches or 3 matches which he played, I think he scored pretty well in 2 T20 matches. So both right hand, left hand combination, I think in this entire 3 test T20 which we have seen so far, these 2 are the fine for West Indies. तो अजय, जो तीसरा T20 वो सबसे चैलेंजिंग रहा है। 164 was put on the board. India scored 165 for 3, winning by 7 wickets, but 6 deliveries to spare. It was a much more biting match between the 2. Absolutely, I think it will be remembered for Sky's innings. It was special the way he batted, absolutely phenomenal. He got 100 in England as well. मुझे लगता है जो उनके पास talent है, that's enormous. And somehow he wasn't getting runs top of the order, opening the batting. पर जैसे उन्होंने खेला, the way he paced his innings, as Sabha was mentioning earlier, Arjun, he's a special talent. और ये एक बहुत बड़े मैच विनर है विद समवन लाइक रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, क्योंकि इनको गेंदबाजी करना अपने आप में बहुत समस्या है। आई वाज वाचिंग हिम, आप पैड लाइन पे करेंगे सो रिस्टी, अगर आप ऑफ पे डालेंगे द मार्जिन ऑफ एरर अगेंस्ट हिम इज मिनिमल, क्योंकि ऑफ पे डालेंगे बिटवीन कवर एंड लॉन्ग ऑफ कितनी आसानी से वो खेलते हैं। सो एज अ बॉलर इज रियली डिफिकल्ट, एंड वंस इज इन फुल फ्लो टू स्टॉप हिम एंड टू स्टेम द फ्लो ऑफ रन्स अगेंस्ट हिम इज रियली डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर। सो आई थिंक दैट इनिंग्स विल रिमेंबर्ड, the way he batted, the run chase for India, as rightly mentioned, not easy, because 164 wasn't a bad score, but chasing out pretty well India, and I think they won the game very handsomely in the end. Well, they call cricket a batter's game, but it's time now to assess the performance of the bowlers in the first 3 T20s. So, Sabha, what's your take on the bowlers? Obed McCoy has really made an impression with 6 for 17
in the second T20 that West Indies won. हम talent की बात कर रहे थे. Do tell us about this bowler. Good to see a young left-arm seamer do well. On a wicket that was favourable for seamers. Ubaid McCoy stick to a good line, and that is why he was able to pick up those wickets. 6 wickets in the T20 game is such an incredible achievement. Ubaid McCoy was able to do so because he has that control over the variations. And tall, lanky left-arm seam bowlers, not easy for the Indian batters to pick those kind of deliveries. Like Bruce Reid of Australia. Yeah, well, Bruce Reid, whatever I could recall, he was quicker. But I think Ubaid McCoy is still young, and there is so much more for him to learn. But this is again a challenging situation for him. But for him to do well against a top-quality batting side is wonderful. Not only him, they do have Dominic Drakes. They do have Akil Hussain has done quite well. The left-arm spinner has been an excellent all-rounder for West Indies. So I think these young hopefuls from the West Indian side, they have done quite a credible job for their side. Ajay, Akil Hussain, 3 wickets, given away 64 runs in 3 matches. Jason Holder, 4 wickets, given away 103 runs of the 2 matches. What's your take? I think, first coming to Akil Hussain, the way he's bowled, because, being a spinner, Indian batters, normally they bat well against the spinners. जैसे उन्होंने गेंदबाजी करी है, I think again using the angles very nicely. उनके पास क्षमता नजर आती है. He's got that guile as well, that turn as well. And Jason Holder की बात करें, he's one of the experienced bowlers they possess, West Indies. But I think both of them have done reasonably well along with McCoy. I think they have been, the backbone of this bowling attack for West Indies. But I think I was very impressed with Akil Hussain because the best part was he's bowling within the stumps. आप ज़्यादा room नहीं दे रहे batsman को to free his arms, and he's got that turn as well. And coming back to his performance, 1 wicket in the first T20, then 1 for 22. In all the games you see, he's been economical. And against a good Indian batting lineup, against a good, strong Indian batting lineup, these figures reflect the way he's bowled, Akil Hussain. So he's been really impressive for West Indies. अभी ये trend चल रहा है with left-arm spinners की, they tend to push it through the air very quickly. He's a slow orthodox bowler. थोड़ा करना पड़ता है ना, मतलब T20 का खेल है, थोड़ा हवा देंगे तो आजकल तो बल्ले वैसे ही अर्जुन बाहर चल जाती है गेंद. थोड़ा सा आपको गति में मिशन करना पड़ता है. ये नहीं कि हर गेंद आप तेज करेंगे. You got to vary your pace at times, but use the angles pretty well. That's his strength. और फिर उनके पास वो turn भी है. Sometimes वो arm ball का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं. वो turn उनके पास है. So he bowls with a lot of guile, and he's a thinking bowler. I've seen him in the Caribbean Premier League as well. He's always he's among the wickets. And these figures, all the 3 T20s, the way he's bowled, he's been really impressive for West Indies. But T20 में आजकल अर्जुन हो क्या रहा है कि wrist spinners का ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है. जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनके लिए कठिन होता जा रहा है. चाहे आप जडेजा को देख लें या फिर कोई और अश्विन को देख लें, क्योंकि अब जो बल्लेबाज हैं अपने आप को सेटअप कर लेते हैं बहुत जल्दी अगर आप फिंगर स्पिनर हैं. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास चतुराई है, उसके पास बुद्धि है. But they also overusing the googly, the wrist spinners. No, but wrist spinners are still they are wicket taking bowlers, they are attacking bowlers, and I think that is the biggest advantage for them. Well, we have Rajendra Jadeja's आंकड़े जो हैं 16 runs of 13 deliveries, 2 boundaries, then 27 runs in the second match. Again, third match he did not play. Ajay, what's your take on Jadeja? You're talking about spinners, wrist spinners versus finger spinners. ये तो अर्जुन उनकी बैटिंग की बात है. He's such a brilliant all-rounder. ठीक है, देखिए कई बार ऐसा प्रदर्शन होता नहीं है, but जो भी इनको मौके मिलते हैं, this 27 runs again were very useful for India. ये हमेशा अपना बेस्ट देते हैं. He's a captain's delight. I will always mention about him क्योंकि जैसे फील्डिंग में इनके इनका योगदान रहता है, जैसे गेंदबाजी में इनका योगदान रहता है. पर जैसे सबा ने कहा कई बार आप जो रिस्ट स्पिनर्स हैं वो ज़्यादा आजकल कप्तान भी प्रेफर करते हैं क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं. अगर आप बिश्नोई को देखें, ही इज बोल्ड वेल. पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी जडेजा करते हैं, वी सॉ हिम इन इंग्लैंड एज वेल. ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, गेटिंग 100 इन द टेस्ट मैच एज वेल. सो ही इज वन ऑफ द गो टू प्लेयर्स फॉर द कैप्टन. Right, Bhuvneshwar Kumar, what's your take on him? He has 3 for 58 in his 3 matches. Exceptional, and that's what you expect from an experienced person like Bhuvneshwar Kumar. He has led the bowling contingent quite well. Along with him, Arshdeep has done well. So this is what is expected from Bhuvneshwar Kumar. He in any case is a certainty in the Indian T20 lineup, not only for the Asia Cup but going forward for the World Cup. So I think in such conditions, you see when the ball is not swinging, Bhuvi was able to shorten his length
and add some more variation. And I think that is why he's been so effective. In the first game, he bowled well, extremely frugal. In the second game, again, didn't pick up a wicket, but again, look at the economy of Bhuvneshwar Kumar. In the last game, in which the wicket was quite conducive to batting, still he conceded only 35 runs. Do you think a lack of pace is a handicap? Not at all for Bhuvi. You don't need pace. You need him to swing the ball, which he's been doing quite well. And I think this re-emergence of Bhuvneshwar Kumar is really good news for the Indians. But just in the second T20 Sabha, I was surprised that he didn't bowl the last over because Avesh Khan ko antim over diya. And once you have, someone like Bhuvi in your ranks, I was a bit surprised. Although Rohit Sharma did mention in the presentation कि उन्होंने आवेश को back किया, he wanted, to get him some experience. पर मुझे लगता है कि Bhuvi ने केवल 2 ओवर डाले थे उस T20 में. So I thought, once you have a bowler like Bhuvneshwar Kumar and you're playing for India, you ought to be winning games. And once मुझे लगा कि कहीं ना कहीं Bhuvi के field में है और वो 2 ओवर डाल रहे हैं in T20, that was surprising for me. Well, I hope our viewers have enjoyed the review of the first 3 T20s on CricLIVE. It's time for us to wind up and move on to our next program, which is Fourth Umpire, where they will review the 4th match. And it's time to thank our experts on this program, Sabah Karim and Ajay Mehra. Thank you so much for being with us on CricLIVE. Thank you, Arjun. Such a pleasure. Thank you.